So good afternoon, everyone. We are here to start our business studies session today, and we're going to start on the chapter number 4. The topic of, the title of the chapter is business services. So जब हम बात करते हैं business services की, so we have already, let's just break the title into two parts. The first part is business. Now business, we have already studied. Business क्या होता है? Business is basically an economic activity which is concerned with buying and selling of products, right? उसको हम business बोलते हैं. We have already studied in chapter number 1 also what is the literal meaning of business. So let me just know about you guys, what insight do you have about business? Anybody who would like to tell me what you understand by business? Let me see how much you understood, how much you can inculcate, how much you can, recall what we have done. So anyone who would like to tell me what do you understand by business? I'll wait in the chat box for your answers. I repeat my question. What do you understand by business? When I speak the term business, what is the literal understanding? Basic क्या समझ में आता है business? Obviously, this is what we are talking about. Business studies is the subject name. So when we talk about business, तो क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? What is the first thing that comes to your mind? Okay, so I've started getting the answers. Harshita, sale and purchase. Okay. Ankita, selling of goods to consumers. Siddhi, it refers to economic activity which include manufacturing or trading in goods. Okay. Selling, buying and selling of goods and services. Okay, so most of you have answered. Yeah, Namish, buying and selling or trading of goods and services for profit or social welfare. Absolutely right. So again, जब हम business के बारे में बात करते हैं, so it's not just about buying and selling, but it's also about what is the thing that you will get. कुछ तो benefit होना चाहिए ना उस चीज का. So what is the benefit you are getting out of business? The benefit that you're getting out of business is basically what? It is basically profit. Reward क्या मिलता है? अगर मैं buying and selling कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बदले में? I should get something in return, right? Exactly, profit. I got the answer from most of you. The answer is profit. इसीलिए तो हम business करते हैं, for our prosperation, for our reward, for our profit. इसीलिए तो business होता है सब कुछ, right? अब हम बात करते हैं services की. अब now when we talk about this chapter, business तो हमने बात कर ली कि क्या होता है, buying and selling होगा, profit होगा, reward होगा. पर हम services की बात करते हैं. Let me just start on with a good example. ठीक है? I'll talk in English also and in Hindi also, as told by you guys only. So जब हम बात करते हैं services की, so let's take an example. जब हम movie देखने जाते हैं, when we go to see a movie in a cinema hall. Now, so obviously the situations are different. Lockdown is there, different. But let's just talk about in a normal general situation. Abhi tak, before this corona and everything, we used to go to movie halls, we used to go to cinema halls, and we used to go there and watch movies. Movies sab dekhne jate hain. I hope 99% of the students present in the class, they went at least once in their life to see the movie in a movie theater. Okay. So movie theater में हम जाते हैं. So what do we get? Do we get a good or do we get a service? अब कैसे पता चलेगा good है या service है? क्या हमें वहाँ पे जाके कुछ मिलता है? Tangible? Do we see something? Okay, we see a movie, absolutely right. But what are we getting in return? क्या मिलता है हमें? I got the answer from Siddhi. She says service. Why service? अब हम movie देखने जाते हैं. तो ऐसा तो कुछ नहीं है that we are bringing something from there. ऐसा हो सकता है that we go to see a movie and we purchase some food or something in there. वो different है. But अगर हम straight away जो motive, जिस motive से हम लोग जा रहे हैं movie देखने, अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो क्या होता है? Yes, Namish absolutely said it right. 3 hours of entertainment. Yes, absolutely. हमें क्या मिलता है? 3 hours of entertainment, enjoyment. सिर्फ वही मिलता है. हम वापस आ जाते हैं मूवी देख के. Are we bringing something back? No. This is all we can recall in our mind. सिर्फ दिमाग में ही तो होता है कि ठीक है हम लोगों ने मूवी देखी. We saw this particular actor. His acting was good, and this was the main theme of the movie and all this. But क्या हम कुछ वापस लेके आ रहे हैं? No. It is intangible. As Ankita is saying, it is intangible. Intangible क्या होता है?
tangible जो हमें दिखे, tangible is basically जो हमें दिखता है and we can touch and feel it, that is tangible. जब हम intangible की बात करते हैं तो intangible क्या होता है, जो ना तो हमें we cannot just see it, there's no physical appearance. Yes Harshit, absolutely right, there's no physical appearance, हमें वो दिख नहीं पाता. So service की अगर हम बात करें, क्या entertainment हमें दिख रहा है? Yes, we are seeing the movie, screen है हमारे सामने, but are we bringing something back? नहीं, कुछ नहीं लेके आ रहे. Right, let's talk about one more thing. When we go to salons, we talk about boys first and then the girls. So when we talk about boys salon, okay, so what do? They go there, okay, they say that I need a haircut, okay, तो haircut हो जाता है. So what is this? कोई फिजिकल अपीयरेंस हो रहा है कि ठीक है आपको हेयर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग ऑन इन योर हेयर एंड समथिंग इज गोइंग ऑन, फाइन, एंड व्हेन यू कम बैक देयर इज अ चेंज इन योर हेयर एंड द लुक्स, एब्सोल्युटली राइट. बट क्या कोई गुड्स या सर्विस गुड्स लेके आ रहे हो आप वहां से? अगर आप हेयर कट की बात करते हो तो क्या आप कुछ लेकर आ रहे हो वहां से? व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, आई वांट टू गो टू स्टारबक्स एंड आई वांट टू ड्रिंक अ कॉफी. अब अगर मैं स्टारबक्स जा रही हूँ and I'm getting a coffee, I'm purchasing a coffee, so I will get a coffee in return ना. I'm getting a good, मुझे दिख रहा है ठीक है, this is what I've purchased, तो मुझे दिख रहा है अच्छे से. But what about a haircut? Same goes for girls. Girls go to parlor, right? You go to any makeup studio or wherever and you ask the person to put makeup on you. Okay, what is that? Again, absolute right, it's a service only. हमें कुछ दिख तो नहीं रहा, we cannot segregate it. ठीक है, हमें मेकअप प्रोडक्ट्स दिखेंगे, हमें the person who is doing it, we are seeing everything, we can see the change in our looks, but whatever the person is doing, are we able to justify it in a tangible prospect? No, absolutely right, we are not. Again, when we talk about movie, हम movie की बात कर रहे थे, let's get back to movie again. मूवी की अगर हम बात करें तो 3 hours of entertainment, अब उसको आप कैसे tangible करोगे? You cannot prove it tangible, right? It's intangible. उसको हम बात करते हैं service की. That is the difference between a good and a service. अगर if I know I'm going to Starbucks in order to purchase a coffee, I hope everybody knows Starbucks क्या होता है. Starbucks is basically a coffee shop. So yeah, it came from out of country. It is again an MNC. हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था MNC. MNC क्या होता है? MNC is basically multinational company, right? So Starbucks is again a multinational company. वो क्या हो रहा है, अपनी होम कंट्री के अलावा it is working in other countries as well, right? So चलो हम बात करते हैं सर्विसेज की again. So अगर मुझे पता है मैं जा रही हूँ कॉफी लेने के लिए तो that is a good, मुझे दिख रहा है भाई I am getting a coffee out of it. But what if I am going for watching a movie? तब तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ना, right? All I am getting is a service. ठीक है, I am getting it. अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. We go to a doctor and what is the person doing? Does doctor give you, okay fine, he prescribes you medicines or something like this, he gives a prescription to you, but what else does he does? मेन जो काम के लिए मेन मोटिव जो होता है आपका डॉक्टर का वो क्या होता है? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ यू गोइंग टू अ डॉक्टर? क्यों जाते हो डॉक्टर के? इज ही गिविंग यू एनीथिंग? इज ही गिविंग यू एनी गुड और समथिंग? Yes, no physical appearance, it's a checkup. Yes, we go for a checkup. If suppose just in case I'm having fever, I go to a doctor, he prescribes me medicines and I come back. So what is he doing? He's providing me his service. And why he's providing his service? Because he has that specialized knowledge. उसके पास वो degree है, उसके पास वो particular knowledge है that he could suggest me something better to do, right? So that I can cure myself. Chalo, let's proceed forward with this one. So I think thoda sa, you got an idea what exactly we're going to talk about in this chapter, what services actually means. अब ये तो मैंने general बता दिया कि हम movie की बात कर रहे थे, हम salons की बात कर रहे थे, हम doctors की बात कर रहे थे. But this chapter, as the subject is business studies, so we are going to talk about business services. That means कौन-कौन सी services हम लोगों को मिलती हैं business के अंदर, right? अब क्या मिलता है, कैसे मिलता है, we are going to see in the further chapter. So let's get started. So here we have basically a kind of introduction about services which I told you in brief. Abhi humne discuss kiya tha. So let me just read it out for you. It's the introduction. It says, you must all have at some time or the other
experienced the effect of business activities on your lives? कैसे हम लोगों ने experience किया होगा business activities? Let's just see. Let us examine few examples of business activity, that is purchasing ice cream, CD, cassette, etc. What is common in all of them is that one is purchasing an item and the other is experiencing a service. अगर हम बात करें इस चीज की तो हमें क्या मिलता है? Let's just take an example of purchasing an ice cream. So I go to a ice cream parlor somewhere. Okay, let's take Gyani. Gyani's is actually very famous. Okay, so let's take the name. It is actually nice to know the name. Okay, so Gyani's, I hope you must have tasted. If not, I'll recommend you. Okay, so it's actually very nice. Okay, so when we talk about ice cream parlor Gyani's, so what happens in there? There's a person standing. I will go and I will say I need this, whatever. So he'll give me an ice cream. So that is what I got, the good. मुझे good तो मिल गया. But what is the person doing? The person is providing me the assistance. I am not going to the parlor and scooping everything out myself. मैं खुद तो जाके नहीं करूँगी ना सारा काम. There's a person who is attending me, who is assisting me. You can say I will ask him to do something, then he will prepare a bill also for me. So what is the person doing? वो क्या कर रहा है? वो एक service provide कर रहा है मुझे, right? Along with that, he is giving me a good also. So अगर हम purchasing of ice cream की बात करें, तो it is both. I'm getting a good also, जो कि मुझे tangibly दिख रहा है. I'm purchasing an ice cream, but along with that, preparation of the bill, scooping out everything by himself. I am not doing anything. So again, he's providing a service to me, right? आगे बढ़ते हैं. But there is definitely a difference between the item or good and the service performed. Obviously, एक difference तो है ही. अगर मैं बात कर रही हूँ, obviously जो मुझे good दे रहा है, वो ice cream दे रहा है. That is a good. बट अगर हम सर्विस की बात करें तो वो सर्विस क्या दे रहा है? ही इज असिस्टिंग मी, ही इज अटेंडिंग मी, ही इज टॉकिंग टू मी नाइसली, ही इज आस्किंग माय प्रेफरेंसेस. वो मेरे से पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट, राइट? सो दिस इज अगेन अ सर्विस. तो उसमें डिफरेंशिएशन तो हो गई, एक डिफरेंस तो है, राइट? फॉर अ ले पर्सन, सर्विस आर एसेंशियली इंटैंजिबल्स. ले पर्सन कौन होता है? ले पर्सन, इफ यू हैव एवर सीन, मैं हमेशा से बोलती हूँ ले लैंग्वेज में बात करते हैं. ले लैंग्वेज इज बेसिकली जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती. जैसे मैं बिजनेस की बात करती हूँ, इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज, राइट? सो बिजनेस स्टडीज की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, जो कि हमें पता है 3-4 लाइन्स की प्रॉपर डेफिनेशन है. बट हम ले लैंग्वेज में क्यों बात करते हैं? बिकॉज दिस इज द वन थिंग जो हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाती है, राइट? सो अगर हम ले लैंग्वेज की बात करें, एकदम लेम बात करें, सो उसमें क्या होता है? इट सेज दैट सर्विस क्या होता है? सर्विस इज बेसिकली इंटैंजिबल, जो कि हमें पता चल चुका है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो कि जो सर्विस होती है वो हमेशा इंटैंजिबल होती है. दैट मीन्स हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. फील इन द सेंस वी कैन जस्ट फील दैट ओके समथिंग इज गोइंग ऑन. अगर मैं मूवी देख रही हूँ तो मुझे पता है ठीक है मैं मूवी देखने आई हूँ एंड आई एम फीलिंग द एंटरटेनमेंट, बट आई कैन नॉट सी इट. Okay, there's no physical appearance of a entertainment. Okay, chalo, let's proceed. Now, service are those separately identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or another service. That means they are separately identifiable. That means separate identity है उनकी. ऑब्वियसली हमें पता चल चुका है, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो हमें पता है ये सर्विस अगर मुझे ठीक होना है, if I want to cure myself, तो मैं ऐसा तो नहीं मैं किसी प्लम्बर के पास चली जाऊंगी. Why will I go to a plumber if I'm not feeling well? I need some prescription of medicines. So will I go to a plumber or will I go to a doctor? Obviously I'll go to a doctor. Separately identifiable. मुझे पता है इस काम के लिए I need to go to this particular person, right? Essentially intangible services or activities, जैसे कि हमने बात करी, it is not having any physical appearance, that provides satisfaction of wants. That means whatever I need, whatever I demand, I am getting the same thing. Okay, a goods is a physical product capable of being delivered to a purchaser and involves the transfer of ownership from seller to customer. Obviously, let's take an example. Suppose मैं जाती हूँ एक mobile store पे, right? So if I go to a mobile store and I feel like that I need an Oppo phone. Let's just take an example. I need an Oppo phone. अब मैं वहाँ जाके बोलूँगी sir please can you show me some variants of Oppo? So he'll show me some of the variants or some of the models of this particular brand. Okay, and then I'll purchase one.
सो व्हाट इज हैपनिंग, अब यहाँ पे मैं परचेज कर रही हूँ, सो हु एम आई एम द परचेजर, एंड जो मुझे बेच रहा है, द पर्सन हु इज देयर हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट इज द seller. So I think you got to know purchaser कौन है and seller कौन है. This is I think you guys already know. And one thing which is happening, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं एक सेलर की जो कि मोबाइल स्टोर पे है, जब तक वो मोबाइल उसके स्टोर में है, राइट, टिल द टाइम द फोन इज देयर इन हिज पर्टिकुलर स्टोर, तब तक तो वो उसी का है. ही हैज टू टेक केयर ऑफ इट. इफ समथिंग हैपेंस, फायर हो जाता है या मे बी थेफ्ट हो जाता है, तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो ओनर है उस फोन का तब तक. बट द मोमेंट आई परचेज इट, द मोमेंट इट इज माइन, क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, सेलर से कस्टमर के पास पहुंच गई, अब वो फोन मेरा है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन. Okay, so if anything happens to that particular phone, he will not be responsible. अब सारी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, दैट मीन्स जो ओनरशिप थी वो मुझे ट्रांसफर हो गई, दैट मीन्स कस्टमर का ट्रांसफर हो गई, राइट. Goods are also generally used to refer to commodities or item of all types except service involved in trade or commerce. Now ये जो लिखा है service involved in trade or commerce, if you remember, in the starting of the first chapter we were talking about some of the services, जिसमें हमने बात करी थी बैंकिंग की, हमने बात करी थी वेयर हाउसिंग की, हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन की. सो ये सब सर्विसेज थी. सो ये जो हमने सर्विसेज बिल्कुल we just went on through like this only. We are going to have in-depth analysis and in-depth study about those services only in this chapter. Okay, so I hope goods basically क्या होता है, एक physical product होता है, obviously there is a physical appearance, और अगर हम service की बात करते हैं तो वो intangible, right. अब let me just know till here it is clear or not. See, we're just going to start up the chapter. This is basically the introduction we were talking about, कि service basically होता क्या है and goods basically होता क्या है, right. So I'll wait for everybody's answer. Please let me know, is it clear or not till here? Okay, so I got the message, yes ma'am, all clear. Fine everyone. Khushi, ma'am, last paragraph. Khushi, in the last paragraph we were talking about goods. अब goods क्या होता है, जैसे हमने बात करी, सर्विस जो होता है वो हमारी इंटेंजिबल हमें नहीं दिखाई देगी, बट जो गुड होगा वो हमारा एक फिजिकल प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स वी आर एबल टू सी इट. जैसे कि हमने बात करी, लेट मी जस्ट कोट दैट एग्जांपल अगेन. वी वर टॉकिंग अबाउट स्टारबक्स, हम स्टारबक्स की बात कर रहे थे. सो इफ आई गो टू दैट कॉफी शॉप and I say I need this mocha coffee, that is one variant of Starbucks. Okay, so I say I need mocha coffee. So what will happen? He will give me the coffee. So क्या है, वो physical product है, मैं उसको देख पा रही हूँ, I can touch it, right. I am seeing that okay, if I've given money I am getting this particular thing. Okay, so इसको हम बोलेंगे good. That means it is a physical product, right. और अगर हम बात करें जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, तो जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल स्टोर, कि इफ आई गो टू अ मोबाइल स्टोर एंड मैंने वहां पे जाके फोन खरीदा, सो व्हाट विल हैपन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी. जब तक वो फोन सेलर के पास है, उसकी शॉप में है, तब तक वो उसका है एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. कुछ भी अगर होता है सो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन. बट अगर मैं बात करूं अपनी, अगर मैंने उसको खरीद लिया है, इफ आई जस्ट परचेज दैट वन, ओके, सो व्हाट विल हैपन, अब वो फोन मेरा हो गया, right. So I will be the one taking care of it, I will be the one who will be responsible for it, right. So there is a transfer of ownership as well. Okay, I hope Khushi you understood this one now. Okay, so let's proceed. Now we're going to talk about the nature of the services. Okay, so now when we talk about the nature of the services, the first feature you can say is basically intangibility. अब why we are using this word too much, because ये इसका prime, you can say it's the most prime feature of a service, कि service हमेशा intangible होती है. It cannot be touched or it can be tasted or anything like this. It does not have any physical appearance. जैसे कि let me just read it out. Services are intangible. It cannot touch or taste. For example, the service of a doctor. जैसे कि मैंने बताया, if I know that if I'm not well और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, so what will the person do? अब वो डॉक्टर मुझे ऐसा तो नहीं that he will just give me the prescription, medicines दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, otherwise तो he cannot do ना. He is actually using his intelligence. वो अपना, he is a professional.
सो वो अपनी सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग मी द प्रिस्क्रिप्शन, बाय प्रोवाइडिंग मी द मेडिसिन और समथिंग लाइक दिस. सो वो इंटैंजिबल है, मैं उनकी सर्विस को टैंजिबल नहीं कर सकती कभी, राइट. ऐसे ही अगर चलो हम डॉक्टर की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन मोर थिंग, लॉयर. ओके, अब लॉयर की अगर हम बात करें, एवरीबडी नोज लॉयर इज अ पर्सन हु गोज इन द कोर्ट एंड ही फाइट्स फॉर यू, राइट. सो अब हम लॉयर की बात करें तो लॉयर का भी ऐसा तो नहीं कि टैंजिबल है. द पर्सन इज देयर, द you know he will take money for doing this, he will go to the court and he will fight for my case, ठीक है. बट जो उसकी सर्विस है, जो वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मैं उसको टैंजिबल कर सकती हूँ? क्या वो मुझे दिख रहा है? कैन आई टच दैट पर्टिकुलर सर्विस? नो, आई कैन नॉट. ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं दैट उन्होंने कहा ठीक है मैं लॉयर हूँ एंड यू टेक दिस प्रोडक्ट. नो, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज नॉट, आई कैन नॉट टच दैट और आई कैन नॉट टेस्ट दैट or even I am not able to see that. It is not having a physical appearance. So again, जब हम बात करते हैं सर्विस की, so it is always intangible. That means there is no physical appearance to the same. इसका एग्जाम्पल डॉक्टर हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लॉयर हो सकता है, राइट. चलो, let's proceed to the second feature now. The second one says that it has inconsistency. I repeat, it has inconsistency. अब inconsistency का मतलब क्या हुआ? Inconsistent, that means हर बार चेंज होता रहेगा. कंसिस्टेंट कौन होता है? जैसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी है इस चीज में, दैट मीन्स ये सेम है हर जगह, राइट. इनकंसिस्टेंसी मतलब अलग अलग लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट. कैसे डिफरेंट? ऑलवेज चेंजिंग based on the demands and expectations of different customers as and when it is needed. इसका एग्जाम्पल जो है वो है सर्विस गिवन बाय द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स. चलो, अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी की. इसका मतलब क्या है? हर इंसान, दैट मीन्स हर कस्टमर के लिए ये हमेशा डिफरेंट होगी. कैसे डिफरेंट होगी? लेट मी टॉक अबाउट अगेन विद एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है. अब आई एम अ पर्सन and Khushi is with me and Harshita is with me. We three are going to a doctor. Okay, now Harshita is having headache, I am having stomachache, and Khushi is having leg pain. Okay, so let's just think. अब तीनों का different scenario है. Everybody is having three different problems. अब ऐसा तो नहीं होगा कि the doctor will provide the same medicine to me and to both the other girls also. It will not happen. So क्या होता है? नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमेशा डिफरेंट चीज होंगी. अब ऐसा तो नहीं है अगर मैं कहूँ मेरी आईज में पेन है एंड अंकिता इज देयर, शी सेइंग माय लेग इज पेनिंग, सो इट विल नॉट हैपन नो कि वो सेम मेडिसिन मेरे को भी वर्क करेगी और उसको भी वर्क करेगी. इट विल बी डिफरेंट ओनली, राइट. सो इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? कि वो कंसिस्टेंट नहीं है. इट इज नॉट सेम. कंसिस्टेंसी का अलग, अगर मैं लेन लैंग्वेज में बात करूँ, कंसिस्टेंट मतलब सेम. ओके, सो कंसिस्टेंसी नहीं है, दैट मीन्स वो हमेशा चेंज होता रहेगा. ऐसी अगर मैं बात करूँ इसकी सर्विस प्रोवाइडर की, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की. अब अगर हम बात करें एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, आइडिया, ठीक है. अब क्या होता है? जो एयरटेल है, ओके, एयरटेल का अगर हम रिचार्ज कराते हैं, लेट्स टेक 599 का, ठीक है, एंड इट इज गिविंग 1.5 GB फॉर 80 days. ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई एम जस्ट जितना मुझे पता है, आई एम जस्ट कोटिंग दैट डाउन. सो लेट्स जस्ट टेक एन approximate figure, I'm not wrong, I think this much only. Okay, so एयरटेल का रिचार्ज होगा 599 का फॉर 1.5 GB, ठीक है. आपको पर डे 1.5 GB ऑफ डेटा मिलेगा फॉर 80 days. अब यही रिचार्ज अगर मैं वोडाफोन में जाके देखूंगी, सो वोडाफोन इज प्रोवाइडिंग द सेम 1.5 GB इन 550 rupees. सो व्हाट इज हैपनिंग? ऐसा तो नहीं है कि सेम सर्विस सब प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कॉलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, सब आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, बट इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ कस्टमर्स. अब ऐसा तो नहीं, जरूरी तो नहीं मुझे वोडाफोन का अगर मुझे 599 का रिचार्ज कराना है और मुझे 3 GB का डेटा मिल रहा है उसमें, तो वही चीज मुझे एयरटेल वाले भी दें. नो, इट इज नॉट देयर. सो सर्विस हमेशा डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस, राइट. आई होप दिस इज आल्सो क्लियर. Inconsistency. First we talked about intangibility, now we're talking about inconsistency. चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं हम inseparability. Now inseparability का मतलब क्या होता है? It is not separate. आप उन चीजों को डिफरेंट नहीं कर सकते. Again, services are produced and consumed at the same time, but in case of good, it is not. Now इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं. इसका जो फोटोग्राफ का एग्जाम्पल है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. लेट मी जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट दैट एग्जाम्पल ओनली, डॉक्टर वाला.
So if I go to a doctor, ठीक है, and my head is paining a lot, अब क्या होगा? क्या वो मुझसे ये बोलेंगे कि you know मैम you just come after 5 days, ठीक है, और उसकी बात करेंगे? मतलब I went there and he did not do anything, he did not prescribe me anything, he did not give me any medicines, nothing, and he just says ma'am please come after 5 days. Will it work? No, it will not satisfy me. I am not rid of my headache. मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं ना. I have not been benefited by the same, right? Again, अगर हम इस example की बात करें, the makeup is going on. So if a girl goes and she says, I need a party makeup to be done because in the evening I have to go to attend any party or something. So क्या होगा? Now the makeup person will say, no ma'am, just come after 2 days and then I'll do the makeup. No, it will not happen. जहाँ पे हो रहा है वहीं पे तो मेकअप होगा. अब ऐसे तो नहीं she will say, okay ma'am, you go to the side house and there a plumber is sitting and he will do the makeup for you. No, it will not happen. Service जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे मेकअप होगा, if a makeup is being done in the salon, so उसी टाइम पे मेकअप होगा, it is consumed at the right time, at that time only. अगर मैं बात करूँ कॉफी की, if I go to Starbucks and I say I need a coffee, अब वो कॉफी को मैं अपने घर भी लेके आ के I can consume it. I have an option. If I go to Starbucks, I order a coffee. It is not mandatory कि मुझे वहीं बैठ के कॉफी पीनी है. No, I can bring it at home also. मैं वहाँ पे भी पी सकती हूँ. But जो सर्विस है वो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मुझे वहीं पे कंज्यूम करनी पड़ेगी. जैसे कि मूवी का एग्जांपल हम बात कर रहे थे. If I go to a movie theater, ठीक है, अब मैं वहाँ जा रही हूँ, अब मुझे मूवी देखनी है. तो अब ऐसा तो नहीं मैं वहाँ मूवी देखने जा रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ नहीं ये मैं मूवी अपने घर पे देख लूँगी. So what is the point of going to the movie hall? जब मैं मूवी ही नहीं देख रही वहाँ पे. सो इट इज देयर, जो सर्विस जहाँ पे बनेगी, जहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वहीं पे कंज्यूम होगी. देयर इज नो इनसेपरेबिलिटी. आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? बट अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में तो सेपरेट कर सकते हैं. क्या प्रॉब्लम है? आई गो टू अ कॉफी शॉप, मैंने वहां से कॉफी खरीदी और मैं अपने घर आके कंज्यूम कर रही हूँ. सो देयर कैन बी सेपरेबिलिटी. सो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो ना तो वो आपको दिखेंगी, it will be intangible, right? It will be inseparable. That means जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है आपको वहीं पे कंज्यूम करनी पड़ेगी at that time only, right? I hope इतना क्लियर हो गया. So we are going to stop here for today's class and we are going to continue the further tomorrow. Okay, everyone? Let me just do it. We're going to meet up tomorrow. Thank you so much.